हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्रुति शर्मा और आज मैं आपको कुछ स्ट्रैटेजीज बताऊंगी ऑन हाउ टू एलिमिनेट ऑप्शंस इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. But before I get into that, let me tell you a bit about myself. I have done my MBA in finance. I have done my MA in English. I am a serial topper in CAT and the verbal section. I've been the verbal head in various organizations pertaining to CAT, and I have more than 12 years of experience in teaching in this particular field. ऑलराइट, तो अभी मैं जो बताने वाली हूँ ऑन हाउ टू एलिमिनेट ऑप्शंस इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आई विल बेसिकली बी टेलिंग यू अबाउट द ट्रैप्स. अब ट्रैप्स क्या हैं? ट्रैप्स वो गाइडलाइंस होते हैं जो क्वेश्चन सेटर्स यूज करते हैं. समबडी हु इज मेकिंग अ पेपर और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पेपर, तो ये भी एक जॉब है. तो पैसेजेस तो बड़ी आराम से उनको मिल जाता है बिकॉज दे पिक इट अप फ्रॉम द बेस्ट ऑफ सोर्सेज. उसके लिए हम दूसरा वीडियो बनाएंगे कि ये पैसेजेस कहाँ से आते हैं. तो उनका मेन जॉब होता है टू मेक दोज क्वेश्चंस, विच इज अगेन एन इजी टास्क, क्योंकि क्वेश्चंस भी फिक्स टाइप के होते हैं. मेन आइडिया क्या है बताओ, प्राइमरी पर्पस बताओ, इन्फरेंस बताओ, स्ट्रेंथन करो आर्ग्यूमेंट को, वीकन करो. मेन डिफिकल्ट टास्क उनके लिए भी होता है टू मेक दोज ऑप्शंस दैट विल कंफ्यूज द स्टूडेंट्स. तो उसके लिए वो कुछ गाइडलाइंस यूज करते हैं, और जो उनके लिए गाइडलाइंस है वो हमारे लिए एज स्टूडेंट हमारे लिए वो ट्रैप्स हैं. इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई दोज ट्रैप्स, वी विल बी एबल टू एलिमिनेट द इनकरेक्ट ऑप्शंस. और ये जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ऑप्शन एलिमिनेशन इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आइडेंटिफाइंग द ट्रैप्स, दिस डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेजेस. ऐसा नहीं है कि अलग अलग पैसेजेस के लिए अलग अलग रूल्स होंगे. इट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट अमंग एग्जाम्स ऑल्सो. ऐसा नहीं है कि ये जो रूल्स हैं ये IP मैट के लिए अलग है, कैट के लिए अलग है, जैट के लिए अलग है. नहीं, सबके लिए सेम है व्हेन यू आर गोइंग फॉर ऑप्शन एलिमिनेशन. सो लेट्स गेट इनटू इट. तो सबसे पहले द फर्स्ट वन इज वर्बोसिटी. वर्बोसिटी का मतलब क्या होता है? वर्बोसिटी का मतलब होता है वर्डनेस, यानी कि यूजिंग टू मेनी वर्ड्स. वर्बोस का मतलब होता है वर्डी. सो काइंड ऑफ लुक आउट फॉर दोज ऑप्शंस एंड बी कॉशियस ऑफ देम. Certain options are too verbose to be correct. That means there are just way too many words. तो ध्यान देना. These options will unnecessarily elaborate upon the actual idea, जो कि बहुत कम शब्दों में एलाबोरेट हो सकता है, पर वो खींचते हैं वो ऑप्शंस ताकि वो पूरा ऑप्शन लगे कि अरे हाँ सही है, बट दे वुड एक्चुअली मिस आउट ऑन समथिंग वेरी रेलेवेंट. एंड दे ऐड अ फ्यू रिडंडेंट और रिपीटेड आइडियाज टू गिव द अपीयरेंस ऑफ अ मोर कंप्लीट आंसर. बहुत सारे स्टूडेंट्स देखते हैं अरे वाह ये तो बहुत डिटेल लग रहा है, पूरा समझ आ रहा है, मार्क कर देते हैं. पर पूरा समझ आता है और मे बी पैसेज का कोई एक इम्पॉर्टेंट पार्ट उसमें पिकअप करके डाला रहता है, पर क्वेश्चन से रिलेटेड कोई मेजर पार्ट वुड बी मिसिंग. Verbose options, which can be recognized by their extra length, are a direct indicator of this type of trap and are to be avoided or eliminated. The correct option is always the one that gives the complete picture in the most precise manner. So, yaad rakhiyega, verbosity. Then there is the extreme option. Extreme options are usually characterized by certain words, and I'm going to write down those words for you. Options which have words like never. ये तो कभी हो ही नहीं सकता, in an inferential question. Options which have words like only, solely, definitely, absolutely. इस तरह के options usually extreme होते हैं and they are eliminated. In the rarest of rare case, you might get an extreme passage, but my dear students, actually ज़्यादातर in exams में extreme passages नहीं आते हैं, क्योंकि nobody wants to take any risk. ये सारे national exams हैं, कुछ तो international हैं, तो they cannot take the risk of putting in anything contentious, debatable, जहाँ पे वो एक बहुत extreme stand ले. तो unless a passage is very extreme, an option will not be extreme. तो मैंने जैसा कहा rarest of rare case में extreme passage मिलेगा. तो as a rule you can remember कि extreme options are wrong options. उसके अलावा this is a trap that bright students have to be careful of. Bright students who are good at school, who have been good at school, or who are good at college right now. So irrelevance देखिए, options that are not related to the question are usually used to fill up the void. These options might be based on an unrelated part of the same passage. So इसमें जो content होगा वो गलत नहीं होगा, passage के हिसाब से सही होगा, but it would not be related to the given question stem. Like vague options, these options too are framed using impressive words and phrases that give an intellectual feel. These traps can be identified easily if you have comprehended, understood the question correctly. So irrelevance पे ध्यान देना. Irrelevance, then there is out of scope as well. इसका क्या मतलब होता है? बहुत जगह लिखा रहता है out of scope. इसका मतलब होता है कि maybe the passage is about something. Maybe the passage, let us say, is about pandemic or epidemic,
और बहुत डिटेल में दिया है, और जब आप पढ़ रहे हो ना, आप दिमाग में रिलेट कर पा रहे हो, यू आर एबल टू रिलेट टू द कोविड-19 सिचुएशन, टू द कोरोना वायरस। पर पूरे पैसेज में कोविड-19 या कोरोना वायरस का एग्जाम्पल नहीं दिया है, बट पैसेज अभी आया इन द एग्जाम। सो इन वन ऑफ द ऑप्शंस में भी एकदम करेक्ट ऑप्शन है, सब कुछ सही है, सब कुछ रिलेटेड टू द पैसेज है, बट कोविड-19 वर्ड डाल दिया है, एंड यू फील अरे हाँ ये तो एकदम करेक्ट है, बट यू आर ऑल्सो using your extra knowledge there, that is COVID-19, which is not mentioned in the passage, though it is an epidemic, though it is a pandemic, still not mentioned in the passage, तो ये reading comprehension में out of scope हो जाता है. So you have to be cautious of that. People having good general knowledge can fall into this trap. People who are well read also can fall into this trap, क्योंकि maybe जो passage आया है exam में, you know, that is an excerpt from a larger book, और आपने वो किताब पढ़ के रखी है, and one of the answer options actually takes some idea which is from the book only, but it's not from the excerpt given, then also you can fall into this trap. So be cautious of out of scope as well, be cautious of irrelevance. Generalization, this option basically generalizes an idea given in the passage. What does that mean? Passage में लिखा है one scientist came up with an idea, and the answer option says that the scientific community came up with the idea. Can we be sure that one scientist represents the entire scientific community? No, we cannot be sure. So that is generalization. ये तो हुआ जब आप समझ के generalization को हटा रहे हो. कभी कभी तो आपको direct words दिख जाते हैं, words like all, none, everyone, each. These words also show generalization. ये words आपको answer option में दिखेंगे. You know, for example, again, 2-3 people के बारे में कुछ लिखा है, and answer option says everybody or all the human beings, or even the answer option says human beings, जबकि passage में केवल 2-3 लोगों के बारे में लिखा है. So even such an option would be generalized. Exaggeration. These options are also extreme in nature. They are biased and they will take the idea a bit too far. One needs to understand that even though the author's views might support an idea very enthusiastically, the option have to remain relevant to the question and not mirror the author's enthusiasm. In most cases, like I said, exaggerated options can be identified by the use of extreme words, adjectives, and strong bias towards a specific idea. So it's nothing but an extreme option. You can see the words also. Look out for words that indicate extremity. For example, if in the passage you have the word more, it cannot become most in the option. It cannot become all in the option. Repetition. This set of options will have certain phrases which are in common with the correct answer. So basically ये option में words कुछ ऐसे होंगे जो passage में जहाँ पे correct answer दिया है उससे match कर रहे होंगे. But the way these words are kind of related to each other, the way these words are connected to each other, that might lead to a lot of repetition, or that might lead a different overall idea being conveyed. So look out for that also. You cannot just match the words कि option में ये words दिख रहे हैं, passage में ये words हैं, but the meaning can be completely different also. Alright, also watch out for repetition because that only increases the length of an option. Incompleteness. Options can be partially correct or furnish incomplete information. बहुत बार ये trap क्या होता है कि maybe first half of the option is absolutely perfect, but the second half is either irrelevant, out of scope, or maybe downright incorrect. But first half इतना perfect होता है कि हमें लगता है कि oh yeah it's correct. Maybe second जो हम उतने खुद हम convince नहीं है, maybe we feel कि maybe I missed it out. The second part, you know, maybe it is there in the passage. चलो mark कर देते हैं. But no, my dear students, that's also a trap. The first half or 3/4 of the option might be absolutely perfect, and the rest of it is irrelevant, out of scope, maybe absolutely incorrect. So watch out for that and eliminate such an option as well. Contradiction तो बहुत ही simple है. Contradiction is something which I don't think you are having a problem with. ये होते हैं literal incorrect options. These options are easiest to eliminate because they tend to contradict the passage either explicitly or implicitly. Explicit means something which is directly visible to our eyes, एकदम literally contradict कर रहा है. Implicit is something which is implied in the sense it is hidden, but you can derive it from the passage. It can be inferred from the passage. Detecting an explicit contradiction is just a question of reading the passage thoroughly. Implicit contradictions too are easy to discover, but they require a clear understanding of the passage and its implications. Your inferences should be right. Vagueness. Some options use short sentences, impressive words to give the appearance of being short and apt and appropriate and to the point.
However, they end up being vague and incomplete. The best answer is not judged by its length or quality of words used, but by its clarity and completeness of idea. Never select an option if its implication is unclear or if it is not pertaining to the question. That is vagueness. तो ये जो सारे मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ऑफ कोर्स व्हेन वी डू ऑल दीज पॉइंट्स विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, यानी कि पैसेज लेके व्हेन वी लिटरली लुक एट दीज पॉइंट्स, दैट विल गिव यू मोर क्लैरिटी. और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस ऐसे करना है कि आफ्टर अ फ्यू क्लासेस आप जब आरसी प्रैक्टिस कर रहे हो तो rather than just selecting option C to be the right answer, you should also be able to figure out A, B और C में क्या गलत है, why should they be eliminated, are they vague, are they extreme, are they generalized. By the way, there are a few points of option elimination which relates to critical reasoning. हम जब critical reasoning पढ़ते हैं तो हम और भी कुछ points पढ़ते हैं, जैसे कि circular reasoning, यानी कि circular options are to be eliminated. Options which are, there's something called as post hoc or propter hoc. तो ये सारे पॉइंट्स हम क्रिटिकल रीजनिंग में पढ़ेंगे एंड दैट विल काइंड ऑफ इंक्रीज आवर किट ऑफ ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक्स. और ये भी जो 9 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, वी विल बी प्रैक्टिसिंग ऑल दीज ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक यूजिंग पैसेजेस. सो उसके लिए कम अटेंड द लाइव क्लास. Alright, now before I end this strategy, let me just tell you a bit about our Iconic and Plus plans. If you go for our Plus subscription, you'll get live classes, weekly tests, structured courses, and unlimited access. In Iconic, you will get hand-holding by IIM pass-outs. Plus, you will get an individual study planner, you will get your own study material as well. There would be consistent test analysis. The price points for Plus are, for 6 months it is 16,400, 12 months 22,550 and 24 months 32,800. 10% discount लीजिए, use my code, that is Sharma ji. For Iconic course, 12 months is 39,500, 24 months is 59,999. 10% discount if you use my code, that is Sharma ji.